हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello my dear students and friends, welcome back. I am going to make a new video here, and this is the video about want and need. So how we use these two verbs or words in English, want and need. As you know, want means suppose I speak, or I just give you an example here. Like I say, I want to go there. It means मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. I want to go there. But when you use need, it means it is really very urgent for you to do or to get this. Like I say, I need a glass of water. I am thirsty. मैं प्यासा हूँ और मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है. तो ज़रूरत है और मुझे चाहता हूँ या मुझे चाहिए, तो दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा अंतर है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नीड वो होती है जिसके बिना हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो या हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है. और वांट होता है उस चाहिए पर उसके बिना आप रह सकते हो. जैसे मैंने कहा, यू नीड टू वर्क हार्ड टू पास दिस एग्जाम. आपको जरूरत है इस एग्जाम को, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत है आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए. नाउ लेट्स write some sentences or examples here. Suppose I say, I want a piece of paper to note this important message. It's a sentence. I want a piece of paper to note this important message down. Okay. Means I want a piece of paper. मुझे चाहिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ. I need. You can use both, no problem here. I want or I need. But need मतलब होता है जो जरूरत है. I need to earn. I need to earn. I need to work to earn, to survive. I need to earn to survive. Right? Or you can take some more examples here. Like you need to work hard to pass this exam. You need to work hard to pass this exam. Or I want you to work hard to pass this exam. Now see this one. I want you to work hard to. You need to. अभी मैंने कहा you need to work hard to pass this exam.
तुम्हें ज़रूरत है मेहनत करने की इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, मैं चाहता हूँ तुम मेहनत करो उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आई वॉन्ट यू टू वर्क। आई वॉन्ट, और डॉक्टर wants you to take rest for next 3 days. Now see this one. Doctor wants you to take rest for next 3 days. डॉक्टर चाहता है कि आप 3 दिन, अभी अगले 3 दिन और रेस्ट करें। डॉक्टर wants you to take rest for next 3 days. इस सेंटेंस में हम नीड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नीड को कैसे कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस में यूज, लाइक आई नीड यू टू हेल्प मी टू सॉल्व माय प्रॉब्लम। आई नीड यू टू हेल्प मी, मैं चाहता हूँ, मुझे जरूरत है आपकी मदद की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई नीड यू टू हेल्प मी टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। अभी हम कुछ इस तरह के सेंटेंस लाइक आई वॉन्ट यू, माई फादर वॉन्ट्स मी, इस तरह के हम कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं जो क्वेश्चन में भी हो सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे my father wants me to be a doctor, मतलब my father wants me to be a doctor, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। my mother wants me to be an engineer। My mother wants me to be an engineer, but my father wants me to be a doctor। अभी क्वेश्चन में हम इस तरह का सेंटेंस लेते हैं, फिर पास्ट में भी कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे What do you want me to do for you? What do you want me to do for you? आप मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं आपके लिए। What do you want me to do for you? मतलब मैं क्या करूं आपके लिए, ऐसा आप क्या चाहते हैं। What do you want me to do for you? लाइक कुछ इस तरह के भी ले सकते हैं। डू यू वॉन्ट मी टू टीच यू इंग्लिश थ्रू स्काइप? डू यू वॉन्ट मी टू टीच यू इंग्लिश थ्रू स्काइप? हाँ, अभी कुछ नेगेटिव भी ले सकते हैं, लाइक आई डोंट नीड यू टू कम हियर टुमारो। अब जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा, ये हो सकता है कोई बॉस अपने बहुत सारे सबऑर्डिनेट से चाहता है कि वो आके उसकी मदद करें उस दिन, संडे को या कोई छुट्टी वाले दिन। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे कल, तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं। आई डोंट नीड यू टू कम हियर टुमारो, मैं तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बट आई नीड two of these boys, I need these of two boys to come here
to help me। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, है ना। जैसे मैंने कहा सपोज आई नीड टू गो देयर टू सी माई फ्रेंड, मतलब मुझे जरूर, मैं आई नीड टू गो, ट्रबल में है, सपोज माई फ्रेंड इज इन ट्रबल, तो मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत है उसको जाके मिलने की। आई नीड टू गो टू सी माई फ्रेंड एज ही इज इन ट्रबल, क्योंकि वो मुसीबत में है। आई नीड टू गो टू सी माई फ्रेंड एज ही इज इन ट्रबल। तो और भी ले सकते हो आप, जैसे पास्ट में नेगेटिव में भी जा सकते हो, लाइक जैसे पास्ट में हम जाते हैं एक नेवर का यूज करके, आई नेवर वॉन्ट I never wanted you to come here. I never wanted you to come here. मैंने कभी नहीं चाहा कि आप यहाँ पे आए। या I always wanted you to stay with me. I always wanted you to stay with me. मैंने हमेशा चाहा कि तुम मेरे साथ ही रहो। I always wanted you to stay with me. तो देखिए बहुत सारे हो सकते हैं नेगेटिव में, किसी भी टेंस में, क्वेश्चन भी हो सकता है, लाइक एक हम ले लेते हैं हु, हमने लिया नहीं, एक क्वेश्चन लाइक वेयर, या कुछ इस तरीके का एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। Where did you want me to meet you? चलिए ये लिख दिया मैंने। Where did you want me to meet you? आप कहाँ चाहते थे आप कि मैं आपसे मिलूं? Where did you want me to meet you? कब चाहते थे आप कि मैं मिलूं, या कहाँ चाहते थे आप? Where did you want me to meet you? या कोई और भी आप इंटरोगेटिव वर्ड लेके बना सकते हो, जैसे को लेके बनाया, जैसे आपने why do you want me to study abroad? जैसे सपोज यही सेंटेंस, why do you want me to study abroad? आप क्यों चाहते हो मैं बाहर पढूं? Why do you want me to study abroad? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। If you think you want to practice such kind of sentences, you may write down these sentences below that video in comment box. And if you like this video, please like it and share it for others. Subscribe to my channel to watch my new videos. And if you think you want to learn English with me through Skype, you may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. You can contact me. I'll customize a course for you. Thanks for watching that video. Thank you.